Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. It's a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 7th of April. The first news topic is India offer help to end Russia and Ukraine crisis or case a conflict. Second, Center says that they have no data in terms of phone tapping. Third, HAL in tie-up to convert aircraft. We'll see the detail about this. The other news is XC, the variant of coronavirus, has been reported in Mumbai. We'll see the detail and concern. Second last, US announces tough sanctions for Russia. The last is an editorial, a candid conversation about the caged parrot. So this particularly talked about the CBI. Apart from this, at the end of this video, there will be MCQ based questions. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And before that, those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And just to tell you about our open mock test that we are organizing, these are the dates that you can check upon. And these are the quality mock tests that will definitely ensure to get a good revision before a prelims examination. For more details, a video के description के link में जा सकते हैं, register कर सकते हैं और test को ले सकते हैं. Now starting with the news of the day, that is India's offer help to end Russia or Ukraine conflict. This particular news is important for General Studies paper 2 in mains, that is bilateral regional grouping and agreement evolving India's and affecting India's interest. So we'll understand what is India's role in terms of de-escalations of Russia and Ukraine conflict. So the Ministry of External Affairs in a statement to Parliament has said that India would be glad to help and bring down the resolutions, a crisis that has arisen in the Ukraine. We know that recently Russia has invaded Ukraine, and because of which many humanitarian crises has also in place. जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसमें वोटिंग हुई, इंडिया ने एब्सटेन किया, बट अगेन इंडिया ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर अ रिजोल्यूशन विच इज डिप्लोमेटिक इन नेचर, विच इज ऑफ अ म्यूचुअल रिकॉग्निजेंस, एंड इवन इट कॉल फॉर अ मोर अप्रोच वेयर द रिजोल्यूशन कुड बी गिवन एंड द ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस वहाँ पे वो खत्म की जा सके. Now speaking in the Lok Sabha during the discussion under the rule 193, it was said that the crisis in Ukraine and its implications is said that basically a very important partners है Russia India के लिए, and it was also held that India is against the conflict. India ने जब भी abstain किया है तब से ये कहा है कि दोनों countries को बात करने की ज़रूरत है and they should come for a basically a resolution which is mutually accepted. But again जो NATO के साथ even जो अलाइंसेस होने की बात हो रही थी वो एक बहुत बड़ी कंसर्न थी रशिया के लिए, बिकॉज ऑफ द रीजन रशिया हैज़ इन्वेटेड. इसके लॉन्ग टर्म भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगी वो आने वाले समय में बहुत लंबी होंगी. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ इंडियाज़ कंटेक्स्ट, बिकॉज वॉट एवर हैज़ हैपेंड ऑलमोस्ट एक मंथ निकल चुका है जहाँ पे इस तरह के इम्पैक्ट देखे जा रहे हैं रशिया के यूक्रेन, और इवन जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन है वो भी अच्छी है. Now, Operation Ganga that specifically took place, this is what was informed in the parliament. Operation Ganga is the initiative that was launched by the government to bring back Indian student, which was stranded in the Ukraine. बहुत सारे ऐसे medical के students हैं जो वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, and not only medical, many other stream students are also studying, right? So, the reason being the government of India has decided that immediate intervention is required to ensure कि जितने भी बच्चे वहाँ हैं उनको वहाँ पर वापस लाया जा सके. Now India has already successfully brought back more than 1,000 and even it is anticipated कि कुछ 10 से 15,000 के आसपास बच्चों को लाया गया, and even India has also helped for a neighbor country that include Nepal and Bangladesh, right? The evacuation of Indian citizens took place in the border areas, basically जो यूक्रेन की border से like Hungary, Poland, Romania, Slovak Republic जो है इन सारे regions पे उनको लाया गया, इकट्ठा किया गया, and a flight Globe Master was there जिनसे बल्क पे लोगों को वहाँ से लाया. Now, India's stand क्या रही है इस पूरे इंसिडेंट के दौरान? So, in a diplomacy term, in terms of the bilateral relationship, India continued to press a forceful and immediate cessations of hostility and to end the violence. But again, India ने abstain नहीं किया था voting से. They said that there should be a mutual resolution that should be coming in this regard.
Now, India has encouraged the talks between the Ukraine and Russia and also include their president to come into action, and they should have a direct interaction to come to a resolution. This is what India has pitched for. Now, India-US specific relations की अगर बात करें, how things are working in terms of India and US, although we are dependent on Russia mostly for the defense equipments, जो हमारी defense की import उस पर हम बहुत ज़्यादा Israel और Russia पे dependent हैं, mostly. So India efforts to stabilize economic transition between India and Russia because Russia is a very important partner for India. This was also a statement that has come from the Ministry of External Affairs. And Russia continue to remain the largest arms supplier to India, right? चाहे वो किसी और दूसरे कंट्री से competitions में बात की जाए, फ्रांस, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और अदर वेस्टर्न कंट्रीज पे, तो रशिया would be the country from which India import most of its arms supplies. Now, the other news center says it has no data on phone tapping. This was a statement that was made in the parliament. This particular news is important for general studies paper 2. That is government policies and intervention for the development of various sectors and issues arising from it, design and implementations. So, एक recent statement में Union Home Minister ने कहा है, they have categorically stated that there is no data on the lawful intervention made by the authorities of intelligence or law enforcement agencies ने किस तरह की टैपिंग की है या किस तरह की बेसिकली अनलॉफुल एक्टिविटीज इन सेक्टर्स को लेकर के हुई है. तो ये सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड्स है वो पार्लियामेंट के पास नहीं है, इवन मिनिस्ट्री के पास नहीं है. Even the controversy over the alleged deployment of the Pegasus, this is a software which was again built by NSO. We have discussed this news in detail. अगर आपको NSO के बारे में पता नहीं है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं. NSO एक इजरायली कंपनी है जिसने पेगासस को बनाया हुआ है. पेगासस के बारे में ये कहा जाता है कि इवन आपकी सेल फोन बंद भी है, देन दे कैन ऑपरेट योर माइक एंड इवन कैमरास, राइट. सो इट्स अ वेरी पोटेंशियल malware, spyware that is being used by the government. बेसिकली इसको परचेज गवर्नमेंट ही कर सकती है और अपने इंटरनल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज में यूज कर सकती है. बट पेगासस का जो इशू हुआ था इंडिया में, दैट वाज विद रिगार्ड टू द स्नूपिंग दैट वाज डन इन द पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट एंड अदर पीपल, राइट. So these were the concern that despite the fact अगर Pegasus सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को सेल की जाती है and also for the security purposes, how it has breached its rules and regulation and it has snooped some politician, journalists and other people, right. So that was a concern. बहुत ज़्यादा डिबेट हुई थी पार्लियामेंट के इससे पहले वाले सेशन में. आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट डिटेल पार्ट, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि malware, spyware किस तरह से काम करती है. यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल. नाउ रिटन सबमिशंस जो दी गई उसमें बताया गया है कि जो CIC है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो मिनिस्टर ने बताया दे आर अनेबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड बाय द एप्लीकेंट फॉर द डिटेल ऑन द फोन टैपिंग. कुछ 10 एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट बताई गई है, बट दे सेड दैट वी डू नॉट हैव एनी स्टैटिकल इंफॉर्मेशन ऑन दिस पर्टिकुलर रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा of the snooping or any other recording that was done, right? So ministry has made it clear that the records were weed out after every 6 months. अगर किसी भी तरह से कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, कोई सिक्योरिटी एजेंसी इस तरह की एक्शंस लेती हैं तो उस डेटा को 6 मंथ के अंदर डिस्ट्रॉ कर दिया जाता है अंडर द सेक्शन 5(2) of the Telegraph Act and section 69 of the Information Act 2000. So ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि पार्लियामेंट में शेयर की गई. दिस अगेन be important for your mains also. Now, what is CIC? अगर Central Information Commission की बात करें, this was constituted way back in 2005 and it was basically encapsulated under the Right to Information Act. तो इसकी जो पावर वो derive करती है वो RTI 2005 से करती है. The jurisdiction of the commission extend to all central public authority. This is a factually important point for your prelims examination. And the commission has certain power with regards to the section that is specifically mentioned, section 18, 19, 20 and 25 of the RTI Act. And just to tell you, CIC is not a constitutional body. So make sure you do not get confused with regard to this. Now power of CIC की अगर बात करें, it has an ambit of power, बहुत सारी power है और broad powers है. But to precise, I'm getting into some more power which actually it is doing in a practical terms. Adjudications of second appeal for giving information, directions for keeping the record, suo motu disclosures and receiving, inquiries into the complaint that on the inability to file the RTI, imposition of penalties and monitoring of reporting including the preparation of annual report, and the decision of the commission are finally binding. तो जो भी decision होती है commission की वो finally binding होती है.
Now, the other news, HAL in tie-up to convert aircraft. This particular news is important for General Studies Paper 3 in mains, that is Achievement of India in Science and Technology, Indianizations of Technology and Developing of New Technology. This can again be important for General Studies Paper 2, where government policies and interventions are concerned. तो क्या डिसीजन ली गई है रिसेंटली? जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, दे हैव इंटर्ड इनटू द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ ये कोलैबोरेशन हुई है, एमओयू हुई है, जहाँ पे वो जो सिविल पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट है उसको मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करेंगे. सो दिस इज एमओयू साइंड बिटवीन इंडिया एंड इजराइल. इफ इट इज बीइंग आस्क्ड इन एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यू कैन ईजिली आंसर दिस. Now, क्या डील के बारे में आपको जानने की जरूरत है? द फर्स्ट दैट HAL will convert the civil aircraft into mid-air refueling and even will go for cargo and transport capabilities. ये जो conversion होगी passenger aircraft की will go into cargo and tanker, and that has been lucrative business and which has emerged as the key player in this particular arena, or you can say aviation sector. Now, India has been in talk with France to lease out A330 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर, जहाँ पे फ्रेंच के एयरफोर्स के साथ भी ट्रेनिंग हो रही है अंडर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील. सो दीज आर सम ऑफ द एडवांसमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस इन द एविएशन सेक्टर एंड इवन टू बूस्ट कार्गो एंड ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया. Now, aircraft जो convert की जानी है, the government of India is looking at conversion of 6 aircraft into tanker, and this development is a setback to Airbus, which has emerged as a front runner in IF plan to get the mid refuelers. But again, the move will provide a defense ecosystem which will have a new capabilities, एक cost of effective solutions होगी इंडियन मार्केट के लिए, और स्टेट ऑफ आर्ट जो टेक्नोलॉजीज है वो इनकॉर्पोरेट की जाएगी, टेक्नोलॉजिकल, इवन फॉर डिफेंस इकोसिस्टम एंड फॉर द अदर लॉजिस्टिक पार्ट्स. Now, we have Defense Acquisition Procedure 2020. This is which guides the entire process. तो एक गाइडिंग फैक्टर की तरह डीएपी एक्ट करती है. डीएपी बेसिकली फोकस ऑन सिंप्लीफाइंग द डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज करती है, मॉनिटरिंग करती है मैकेनिज्म ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज को. ना डीएपी की बात करें, एक प्रोडक्ट है जहाँ पे एक्सटेंसिव एनालिसिस की गई दैट हाउ द डिलिबरेशन एंड फोकस फॉर्मुलेशन कैन बी देयर इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंस इन टर्म्स ऑफ द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, राइट. तो इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक बहुत बड़ी कंपोनेंट है, जहाँ पे एम्फेसिस की गई है सिंप्लीफिकेशन, डेलीगेशंस, रिड्यूस टाइमलाइन एंड इवन इट पोज फॉर द इंडस्ट्री फ्रेंडली रूल्स रेगुलेशन एज फार एज पॉसिबल्स. कुछ एट्रीब्यूट्स हैं डीएपी के डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम्स के, यू कैन से. तो यहाँ पे जो पॉलिसी है डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी, दैट कट डाउन द पेरिसेबल time frame for various activities and even institutionalizing a robust mechanism to monitor for probity at various stages and acquisition program. These are some of the attributes that is under the DAP 2020. Now, XC variant of coronavirus, this is something which is not alarming in India, but again we have to be concerned about it. So this particular news is important for General Studies Paper 2, issues related to development and management of health. According to the Union Health Ministry, जो present evidence ये suggest करती है कि अभी किसी तरह की XC variant इंडिया में नहीं रिपोर्ट की गई है. And again, this is a variant which is not a concern for a country like India. We already have third wave, जहाँ पे ओमिक्रॉन के काफ़ी cases रिपोर्ट किए जा चुके हैं. So the ministry has denied media report that the case of new mutant was reported in Mumbai. एक जो सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन की XC वेरिएंट, उसके बारे में कही गई है. And this was reported for a person who was age group of 50, but still it is not confirmed कि वो XC वेरिएंट है या नहीं. गवर्नमेंट ने अभी इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, ना ही मुंबई में जो BMC है उसने इस बारे में कुछ कहा है. Now, XC variant of Omicron, this is a sub variant of Omicron which caused third wave in India, and it was still अभी इस टाइम पे जो Omicron की फैमिली है, इस पर्टिकुलर XC वेरिएंट के केसेस नहीं रिपोर्ट किए गए. Now, the announcement was about the discovery that has sparked concern regarding the possibility of fresh wave in India. और COVID-19 के अगर केसेस की बात करें इंडिया में, this is lowest in the past 2 years. जितनी भी केसेस रिपोर्ट होनी थी अभी वो सबसे lowest है अभी के टाइम. Now, the XC variant is responsible for more than 90% of the infections this year. और जो 2 prominent इसके variant थे, that is BA.1 और BA.2, ये काफ़ी ज़्यादा concerning है, जो कि अभी चाइना में और दूसरे कंट्रीज में, इवन वेस्टर्न कंट्रीज आर आल्सो इन द ग्रिप ऑफ दिस वेरिएंट्स. सो BA.2 वाज फाउंड स्लाइटली मोर ट्रांसमिटेबल कंपेयर टू BA.1 एंड इवन इट वाज नॉट मोर डेंजरस. तो कंपैरेटिवली अगर बात करें जो डेल्टा वेरिएंट थी उसकी जो लिथैलिटी थी उससे काफ़ी कम है, बट
इन्फेक्शियस ये ज़्यादा है। Now, threat from XE variant की अगर बात करें, there is no evidence to show that XE variant is significantly different from any other variant of Omicron. And this has been noticed that XE could be about 10% more transmissible than the BA2 dot variant, right, which was already reported in India during the third wave of COVID-19. Now, again, another news, that is US announced tough sanctions for Russia. This particular news is important for General Studies paper 2, that is effect of policies and politics for developed and developing countries. So जिस तरह से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेट किया है, उसके बाद खास करके वेस्टर्न कंट्रीज में US is a country which is very vocal on its part, and the US administration has recently announced an additional sanctions that is going to Russia's central bank. तो एक stringent action की तरह US act कर रही है, and they're looking forward for more economic sanction for Russia. So the move will prohibit Americans from doing any business, and it will freeze all the assets that is within the United States. रशिया की जितनी भी assets United States में वो पूरी तरह से freeze कर ली जाएगी. This is the decision coming from the Biden administration, which is the currently president of United States. Now, the new measure will also shout for the National Wealth Fund, जो कि Russia Federation की है, and the Ministry of Finance of Russia Federation would be impacted with the decision. The US official has said that US expect its allies to also take the similar steps. तो US ने अपने जो allies है उनके साथ भी कहा है कि वो भी एक strict action रखे रशिया के खिलाफ. Now, US and its allies has imposed several sanctions. चाहे वो बात की जाए recent weeks में, it has imposed many economic sanctions. Even the leaders of European Commission, France, Germany, Italy, United Kingdom, Canada, and US has planned limited sale of so-called golden passport as well, right? And this measures will definitely impact Russia in a longer run, जहाँ पे full blocking और sanctions की बात की जा रही है. And एशिया की जो largest बैंक है, Shrill Bank, and even उसके जो private sector है, private arm जो है, Alpha Bank, उसको भी पूरी तरह से freeze किया जाएगा, prohibit किया जाएगा किसी भी तरह के trading और transaction in United States and many other its allies countries. Now, क्या impact हो सकती है इंडिया में? इंडिया के stand को अगर आप समझे तो India is not directly impacted on the new set of sanctions that is going to be there, because US ने जिस तरह के sanctions लगाई है वो mostly European Union के जो countries हैं उनको impact कर सकती है, या फिर जो G7 के member countries हैं उनको. India is not a part of G7 as of now. Now, a candid conversation over the caged parrot. So this, by caged parrot, it means the CBI, that is the Central Bureau of Investigation. This particular editorial is important for General Studies paper 3, various security forces and their mandate. This is a specific topic which is already mentioned. Whatever I am discussing in this section of syllabus, this all are mentioned in your syllabus. So do check it out. तो ये editorial लिखी गई है R.K. राघवन साहब के द्वारा. He is a former CBI director and he also is a professor, basically expert है जो कि constitutional matters पर लिखते रहे. Now, what he is trying to convey with this editorial, I'll be simplifying the 5 important subheads, that is background, CGI remark on the CBI, mandatory tenure of CBI के बारे में, bright spot or lows, and even the way forward. So the entire editorial focuses upon the functioning of the CBI. So recently, the Chief Justice of India, Mr. N.V. Ramana, he was addressing a lecture at the inaugural of CBI की जो Foundations Day है, उस पर उन्होंने कहा है that as the time passes, जो एक इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूशंस जो है CBI की, उसने अपने reputations में up और down देखी है, and it definitely need a deep scrutiny. This is what the CGI, that is Mr. N.V. Ramana, has to state with regards to the functioning of the CBI. And it called for that action and inaction has raised concern with regards to the credibility in some cases of the institution, which is considered to be impartial, transparent, and vocal about its work. Now, CGI की क्या remark रही है CBI के बारे में? You need to understand, because this is something very important for your mains examination, right? UPSC has already asked this type of question in mains. So CGI has warned that investigation agency will pay a heavy price for their utter willingness to stop and please the politician, and if they do not take this work seriously, it will definitely call for a decremental impression of the CBI, right? So the CGI has called upon the investigations to stand for unethical practices. और जिस तरह से ये practices हुई है वो कहीं ना कहीं public trust को भी कम करती है. And he categorically stated there is a need for a Supreme Court and equally strong High Court
to keep our investigator on straight and narrow path, right? By narrow path it mean कि वो अपने जिस काम के लिए उनको रखा गया है, जो उनकी ड्यूटी है, जो ड्यूटी असाइंड है, जो मोटो है, उसको अचीव करे, ना कि किसी पॉलिटिकल विल को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए इस तरह के एक्शंस। नाउ मैंडेटरी टेन्योर ऑफ सीबीआई की गई थी, एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन रही है सीबीआई के हिस्ट्री में, राइट? सो देयर इज नो डिनाइंग फैक्ट दैट सीबीआई हैज बीन ग्रॉसली मिसयूज्ड बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट. दिस इज नॉट फॉर वन गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट ने सीबीआई की मिसयूज की है. दिस इज अ ट्रूथ दैट इंडिया हैज टू विटनेस, राइट? एंड इवन ड्यूरिंग जेएस वर्मा कमेटी 1997 में उन्होंने कहा था कि ये ज़रूरी है कि अब हमें सीबीआई की जो टेन्योर है उसको 2 सालों के लिए फिक्स करना पड़ेगा. So he come up with a measured decision where he decided that the 2-year tenure must be fixed, right? And the CBI director will change with almost, उन्होंने कोट किया है इस एडिटोरियल में आर.के. राघवन साहब ने कि इस तरह से सीबीआई के डायरेक्टर को चेंज की जाती थी जैसे कोई अपने कपड़े को चेंज करते हर दिन, राइट? सो दिस इज हाउ इट हैज कॉल्ड फॉर अ मोर stringent process of recruitment for the CBI director. So the mandatory tenure was meant to insulate that CBI director is not a car piece of an executive, and the process has been expanded that the CGI was also included in the selection panel. So this called for a more strong CBI which is impartial in their complete working process. Now bright spots और लो की अगर बात करें तो CBI has seen मेरी ब्राइटेस्ट IPS ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विसेज के कुछ ब्राइटेस्ट ऑफिसर्स हैं जो कि डेपुटेड हैं सीबीआई में, बहुत कमेंडेबल काम किया है लोगों ने. एंड इवन इट हैज़ इनफ माइल्ड रैंक सुपरवाइजर अलॉन्ग विद स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट देयर इज अ नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग विशियस लीडर्स जो कि एक ऑनेस्ट तरीके से इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाए और बिना किसी पॉलिटिकल विल के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सीबीआई जिस मैंडेट से स्टैब्लिश हुई है उसको उसी डायरेक्शन में काम करने के लिए दिया जाए. Unfortunately, in recent years, the 2 director that was brought to the CBI has definitely have made the impression detrimental और कहीं ना कहीं CBI की जो छवि है वो internationally भी खराब हुई. Now, looking into the way forward, there's a need. The need of the hour is to focus on weeding out the dishonest among the officers और उनको रिवार्ड किया जाए जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है. दिस इज ओनली द वे दैट अ प्रोफेशनली इनोवेशन कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन सीबीआई which is a pivotal institution in our country. एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि किसी भी तरह impartial inquiry conduct करने के लिए जानी जाती है. So this is how the way forward can be concluded. Now moving ahead with the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answer of yesterday question. For first question, the correct option is C. For second question, also the correct option is C. Today's MCQ for practice आपको बताना है smart anti-airfield weapon के बारे में. This developed by DRDO in Hyderabad in collaboration with IAF, or it is capable of engineering the ground enemy air fired assets that is range up to 100 kilometers. So do check out for the correct options. Second, Varuna 2021. It's a 19th edition of Indian Navy French bilateral exercises, and this is for the first time कि United Arab Emirates ने इस तरह की exercise की है. So if you know, it's well and good. If not, you have to check for the correct option because exercises, रिपोर्ट्स, इंडेक्स, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी रेलिवेंट है. सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डेली न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस फॉलोड बाय द MCQ क्वेश्चंस. इफ यू हैव एनी अदर कंसर्न यू कैन लेट मी नो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. फॉर टाइम बीइंग आई एम साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.